So gas state. How does gas exert pressure? गैस से प्रेशर लगता है एंड हाउ डज गैस एक्सर्ट प्रेशर वो हमें देखिए. सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर कैसे देखो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. तो वी नो बलून. बलून के अंदर बलून इज हैविंग अ कांस्टेंट शेप because gases molecules are applying pressure from inside, right? So gases apply pressure. इसका एग्जांपल देखो. गैस नीड स्पेस. yes it needs space and so it will apply pressure. ऐसे भी हम सोच सकते हैं. Yes, we can say. So the thing is, you can also try blowing some air on your hand, है ना? So you will see कि your there is some pressure that you are feeling on your hand, right? So in this case, we can say कि gases apply pressure because they apply because of the random movement. लिखेंगे. हाँ. तो वाई डू गैसेस अप्लाई प्रेशर या हाउ डू गैसेस अप्लाई प्रेशर उसका आंसर लिख रहे हैं. हम लिखेंगे गैसेस अप्लाई प्रेशर बिकॉज ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स एंड ड्यू टू दिस दे hit the walls of container. They hit walls of container leading to force which leads to application of force लिख सकते हैं which leads to application of force per unit area, that is also known as pressure per unit area. तो इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. तो पहले हैव यू रिटन इट डाउन? सर मुझे ये वाली लाइन नहीं समझ में आई. एंड ड्यू टू देयर दे हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर. Due to this, they hit the walls of container. I am explaining the whole line again. Just write it down once, then I'll explain. Okay. So what we are saying is movement of their particles, and due to this, they hit the walls of the container, which leads to application of force per unit area, also known as pressure. Written it down? Yes, sir. So I'm saying, consider a beaker. Suppose, consider a bottle. Consider a beaker या फिर एक जार
जिसके अंदर वी हैव सर्टेन पार्टिकल्स, ठीक है ना, और दीज पार्टिकल्स, ठीक है, these particles can move, right? These particles can move freely. क्यों? क्योंकि particles of gas they actually move, right? और so the thing is when these particles move, गैस मूव कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, ये बात तो सबको पता है. तो when they are in constant random motion they tend to hit the walls of the container. वो walls of container को बार बार क्या करते हैं, हिट करते हैं. तो by this we mean that particles, अगर कोई तुम्हें हिट करे तो isn't it applying some force on it, on you? अगर तुम्हें हिट करता है तो वो तुम्हारे ऊपर क्या लगाता है, फोर्स, राइट? सो ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है. तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं इसके आंसर को, तो गैसेस, particles of gas show random movement. Particles of gases show random movement. Random movement मतलब they move zigzag anywhere, ठीक है. And during this process they will hit the walls of the container also, क्योंकि वो randomly जा रहे हैं, तो they will encounter walls of the container, है ना. तो so they hit on the walls of the container, and if anything hits on the wall, ठीक है, तो that means it is applying some force, it is applying some force, or this force is being applied on some area, this area, for example this is an area जहाँ पे apply कर रहे हैं. तो the application of force on a unit area, unit means 1 meter square, 1 centimeter square, ये इतने से एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, it is called pressure. So is the explanation clear now?